was made in 1990, when 3 alumni of the first course took over as chiefs of their respective services. They were General S.F. Rodriguez, Admiral L. Ramdas, and Air Chief Marshal N.C. Suri. History repeated itself in 2020, when 3 course mates of the 56th course, General M. Naravne, Admiral Karambir Singh, and Air Chief Marshal R.K.S. Bhadoria, took over as chiefs of their respective services. For the third time in the history of National Defence Academy, course mates from the 61st course, General Manoj Pandey, Admiral R. Hari Kumar, and Air Chief Marshal V.R. Chaudhary succeeded the course mates of 56th course and took over as chiefs of their respective services. Furthermore, we are proud to announce that the first 2 chiefs of defense staff of the Indian Armed Forces, General Bipin Rawat and General Anil Chauhan, had both passed out from this prestigious institute. Chiefs of Defense Staff is the professional head and permanent chairman of Chiefs of Staff Committee. He is the highest ranking uniformed officer on active duty in Indian military and chief advisor to the Ministry of Defense. 6 अक्टूबर 1949 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की नींव रखी गई थी। लगभग 7,000 एकड़ भूमि उस समय बॉम्बे राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। अकादमी का लेआउट आर्किटेक्ट्स की एक टीम द्वारा बनाया गया था, जो उस समय पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री W.X. मैस्करेनस के नेतृत्व में काम कर रहे थे। अकादमी का बुनियादी ढांचा बनाने में लगभग 5 वर्ष लग गए। जो इमारतें आज आपके समक्ष हैं, यह राजपूताना तथा मुगल आर्किटेक्चर का उत्तम मिश्रण है। निर्माण के लिए अपेक्षित धनराशि का योगदान कई राज्यों द्वारा किया गया। कैडेटों के रेसिडेंशियल ब्लॉकों का निर्माण इन्हीं धनराशियों से किया गया और उनका नाम योगदान करने वाले राज्यों के नाम पर रखा गया है। अकादमी का प्रशासनिक ब्लॉक, जिसे हम सूडान ब्लॉक के नाम से जानते हैं, इसके निर्माण में कुछ सहयोग सूडान सरकार द्वारा धनराशि के रूप में किया गया था। यह योगदान सूडान सरकार ने भारतीय सैनिकों के दूसरे विश्व युद्ध में उत्तरी अफ्रीकी अभियान के दौरान प्रदर्शित वीरता की सराहना करते हुए किया था। यहाँ रतेंद्र गौतम की पंक्तियां बहुत सटीक बैठती हैं। मैं एक छोटा सा रेत का टीला ही सही, जलाकर ईंट में तब्दील कर कि मुझे भी घमंड हो। मुझे मंजूर है नींव का पत्थर होना, मुझे मंजूर है नींव का पत्थर होना, बशर्ते मुझ पर बनी इमारत बुलंद हो। The academy shifted to Khadakwasla from Clement Town in December 1954 and was inaugurated on 16 January 1955 by Shri Morarji Desai, the Chief Minister of the then state of Bombay. 16 January is celebrated every year as the National Defence Academy Day. The first passing out parade on this ground was held on 5th June 1955 when the 10th course passed out. The salute on that auspicious occasion was taken by Shri Pandit Jawaharlal Nehru. National Defence Academy's contribution in service to the nation was rewarded on 16 December 1978 when the President of India, Shri Neelam Sanjeeva Reddy, presented the colours to this cradle of military leaders in recognition of the glorious services rendered to the nation by the Academy and its alumni. National Defence Academy, India's pioneer institute of tri-services training based in Khadakwasla, Pune, is completing 75 years of its foundation in January 2024. We are privileged to have the presence of Subedar Major Sanjay Kumar, Paramveer Chakra of the 13th Battalion of the Jammu and Kashmir Rifles, imparting training as an instructor in the Army Training Team of NDA. We also have Olympian Subedar Major Swaran Singh, Arjuna Award recipient, and Resadar Major Ajay Anand Sawant, Arjuna Award recipient, training cadets in rowing and equitation. A cadet's initiation to the academy requires him to pledge himself to the nation, which is done
under the aegis of the adjutant at the hut of remembrance, the sanctum sanctorum of the National Defense Academy. The hut serves as a constant reminder to the cadets of the lofty traditions of valor, courage, and sacrifice of their predecessors, who believed in Naam, Namak, and Nishan. Naam refers to the name of the regiment. Namak means the fidelity to the song, and Nishan means the respect for the flag or the colors of the regiment. During a cadet stay at the academy, they remind themselves of their pledge to the nation by reciting the NDA prayer at the start of each day. It is essential that the cadets imbibe the right principles and are guided by a tangible code of conduct that spells out the right and the wrong. The NDA Honor Code was thus promulgated in March 1998 by Admiral Arun Prakash, the then Commandant. It sees the cadet through his basic training and even thereafter in life. Cadets dedicate themselves to the nation with the Honor Code guiding their conduct. The code embodies a tradition and a rallying point, ensuring an openness to enhance one's character and being guided by one's peer in the right direction. Ladies and gentlemen, the cadets you see marching onto the parade ground are contingent markers taking their positions. The rest of their contingents will soon enter the parade ground from the sides of the quartermaster's fort. They will move to the left and to the right of the parade ground and then line up. देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है कि आप सब अपना ध्यान सामने की तरफ ले जाएं। आप देखेंगे कि कंटिंजेंट मार्कर्स अपना स्थान ले रहे हैं। बाकी कंटिंजेंट जल्द ही परेड प्रांगण पर आएंगे और दाहिने और बाएं मुड़कर अपने स्थान पर खड़े होंगे। Today, there are 1,235 cadets on parade. Out of these, 333 cadets of the 145th course will pass out of the National Defense Academy, out of which 195 are Army cadets, 35 Naval cadets, and 105 Air Force cadets. This term, we have 19 international cadets from 10 different countries: Bhutan, Sri Lanka, Afghanistan, Tajikistan, Myanmar, Sudan, Kyrgyzstan, Tanzania, Uzbekistan, and Bangladesh, passing out with the 145th course. The National Defense Academy has stood as a shining testimony to India's relationship with its friendly foreign countries. This is evident from the fact that the National Defense Academy is presently training 114 cadets from different foreign countries. And ladies and gentlemen, for the first time in the history of National Defense Academy, we have a contingent of 15 female cadets who are participating in the passing out parade of the 145th course. One of the greatest distinctions of the Academy is the happy camaraderie that it confers on all cadets, transcending all service barriers. And the squadron plays a vital role in inculcating this bond and spirit. The squadron acts like a home away from home for the cadets, and even when they pass out of the academy and subsequently get commissioned. This squadron spirit translates into regimental spirit and loyalty to the units and formations and guides them throughout their career.
The sound of the bugles, ladies and gentlemen, heralds the entry of the cadets onto the parade ground. And there they come out, marching smartly onto the parade ground to the inspirational tunes of the Academy song, Hum NDA ke Cadet Hain. Ladies and gentlemen, you can see the contingents marching onto the parade ground to take their positions. The magnificent charger, atop which the adjutant is astride, is Reliant Robin. This splendid and dynamic charger was born in 2009 and has been allotted to the National Defence Academy by Renowned and Veterinary Corps in 2020. This is the 7th parade for Robin as the adjutant's charger in National Defence Academy. Leading the cadets onto the parade ground is Academy Cadet Captain Laksh. A special attraction of today's parade is the flypast by the Super Demonas. You will see the Super Demonas flown by the instructors of the Air Force training team of NDA in Tri Shakti formation, symbolizing a victorious future of the passing out course. The first Super Demona will be flown by Wing Commander Atul Kulkarni, 98th Course, November Squadron. Along with him is Wing Commander Rohit Para, 116th Course, Oscar Squadron. The second Super Demona will be flown by Wing Commander Nikhil, 108th Course, India Squadron, co-piloted by Squadron Leader Piyush. The third Super Demona will be flown by Wing Commander Abhishek Singh, 116th Course, Alpha Squadron. Along with him will be Wing Commander Rajat Gupta. Now, a word about drill. Drill inculcates discipline, which is the bedrock of military life. To those of you who have an aesthetic disposition, drill movements will symbolize the very rhyme and rhythm of the poetry of a well-ordered life. And that's precisely the primary aim of this institution, to train our cadets in the art of cultivating a way of life, in which they attribute the highest and noblest attributes of discipline. देवियों और सज्जनों,
निशान टोली निशान को परेड पर ला रही है। आप सभी से अनुरोध है कि निशान को समुचित सम्मान प्रदान करने हेतु कृपया खड़े हो जाएं तथा जो वर्दी में है वो कृपया अकादमी कैडेट कैप्टन की कमान पर सल्यूट करें। Ladies and gentlemen, the Nishan Toli will now bring in the President's colors. When the colors are brought in, you're requested to rise, and those in uniform will salute at the word of command of the Academy Cadet Captain. The President's colors were presented to the National Defence Academy in recognition of the highest standards of training imparted here. It is the privilege of the cadets of the passing out course to carry the President's colors. In keeping with this tradition, the cadets carrying the President's colors to the parade ground are Squadron Cadet Captain Alok Punia, Flag I Cadet Sergeant Major Vikram Singh, and Cadet Sergeant Major Ashu Yadav. Ladies and gentlemen, the parade is now lined up for review. The cadet commanding today's parade is Academy Cadet Captain Laksh. The officer on the charger to the extreme left is the adjutant, Major Praveen Kumar Tiwari. He's an alumnus of 118th course of National Defence Academy. An infantry officer, he was commissioned into the 19th Battalion of the Bihar Regiment as the first commissioned officer of the unit. Possessing varied operational, staff, and instructional experience, the officer has served as a Ghatak platoon commander
along the Chinese borders in Sikkim, company commander in super high altitude area along line of control in Dras sector, and along line of actual control in Arunachal Pradesh. Additionally, he has undertaken the overseas assignment as an instructor with Indian military training team in Bhutan. His experience extends to training officers from friendly foreign nations. A graduate of Defence Services Staff College, Wellington, the officer assumed the appointment of adjutant on 30 June 2023. He is ably assisted by the Assistant Adjutant Major Abhishek Kundlia. The officer is an alumnus of Charlie Squadron of the 129th Course of the National Defence Academy. He was commissioned into the 5th Battalion of the 11th Gorkha Rifles, Bogra, in December 2016 after passing out from the Indian Military Academy, Dehradun. Major Abhishek Kundlia took over the appointment of Assistant Adjutant in June 2022. The actual footwork of training the cadets of National Defence Academy in all aspects of drill is led by Drill Subedar Major Dharmaraj Guru from 4th Battalion of the 1st Gorkha Rifles. The Drill Subedar Major served as an instructor at National Defence Academy from 2007 to 2010 and at the Indian Military Academy from 2012 to 2017. As regards the lineup of the contingents on parade, we have 17 squadron vice contingents standing as per their positions in the championship banner of spring term 2023. This is followed by the contingent of female cadets, the first batch of whom are in the third term of the academy. Concluding the lineup is the contingent of appointments. In the center of the parade stands the Nishan Toli, proudly carrying the President's colors. पासिंग आउट परेड नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैडेटों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का भव्य समापन है। आवश्यकता आधारित करिकुलम की शुरुआत के साथ आत्म अनुशासन प्रशिक्षण का मूल मंत्र है। एक करिकुलम जो अनुशासन के उच्च क्रम को प्रेरित कर सकता है, मानसिक, नैतिक, शारीरिक और सांस्कृतिक स्तर पर आधारित है। देखरेख, मार्गदर्शन और प्रेरणा के साथ लंबे समय तक प्रदान किया गया प्रशिक्षण एक जिम्मेदार दृष्टिकोण के साथ आत्मनिर्भरता के लिए बल प्रदान करता है। Ladies and gentlemen, we are now awaiting the arrival of Major General Sanjeev Dogra, Deputy Commandant and Chief Instructor, National Defence Academy. Major He has done various staff and instructional appointments to include instructor at Indian Military Training Team, Bhutan, Battalion Commander at Officers Training Academy, Chennai, Directing Staff at College of Defence Management, Secunderabad, and Deputy Commandant and Chief Instructor at Infantry School, Mau. His command tenure includes Command of a Rashtra Rifles Battalion, Brigade Commander of an Infantry Brigade in the Western Theatre, Commandant, War Gaming and Development Center, and General Officer commanding of a mountain division along the line of control. Major General Sanjeev Dogra has a rich combat experience, having served in counterinsurgency in Jammu and Kashmir and has served in almost all terrains, including super high altitude area of Siachen Glacier and high altitude region of Kargil. His important staff assignments include Brigade Major of a Mountain Brigade,
and Brigadier Quartermaster at Officers Training Academy, Gaya. He was Deputy Commandant and Chief Instructor at Infantry School, Mao, before assuming the appointment of Deputy Commandant and Chief Instructor at National Defence Academy. Ladies and gentlemen, Major General Sanjeev Dogra, Deputy Commandant and Chief Instructor, National Defence Academy. Ladies and gentlemen, we are now awaiting the arrival of Vice Admiral Ajay Kochar, Ati Vishish Seva Medal, Nausena Medal, Commandant, National Defence Academy. Vice Admiral Ajay Kochar assumed the appointment of Commandant, National Defence Academy on 1st April 2022. As an alumnus of the National Defence Academy, Vice Admiral Ajay Kochar was commissioned in the Indian Navy on 1st July 1988. He is a graduate of the Defence Services Staff College, Wellington, Naval War College, Mumbai, and Royal College of Defence Studies at United Kingdom. In a career spanning over 34 years, the flag officer has held various challenging command and staff appointments. He has been the fleet commander of the Western Fleet during operational missions, foreign bilateral exercises, and major humanitarian assistance and disaster relief taskings. He has commanded the aircraft carrier INS Vikramaditya, deployed extensively for operations on both east and west coasts. The officer has commissioned INS Trikhand, a frontline frigate for the Navy at Kaliningrad, Russia. His other command appointments include INS Nashak, INS Kirpan, and INS Vibhuti. The staff appointments of the flag officer include Joint Director Naval Plans and Director of Staff Requirements at Integrated Headquarters of Ministry of Defence, wherein he formulated the future maritime perspective and capabilities enhancement plans. He has also steered major shipbuilding projects as Assistant Controller of Carrier Projects and Assistant Controller of Warship Production and Acquisition. With him at the helm of affairs, National Defence Academy has gained immensely owing
to his vast experience and exposure in all arenas of operations, training, and human resource management. Ladies and gentlemen, Vice Admiral Ajay Kochar, Ati Vishish Seva Medal, Nausena Medal, Commandant, National Defence Academy. Ladies and gentlemen, we are now awaiting the arrival of Lieutenant General Ajay Kumar Singh. Ati Vishesh Seva Medal, Yudh Seva Medal, Sena Medal, Vishesh Seva Medal, General Officer Commanding in Chief, Southern Command. Lieutenant General Ajay Kumar Singh is an alumnus of St. Gabriel's Academy, Roorkee, National Defence Academy, Khadakwasla, and Indian Military Academy, Dehradun. He was commissioned into the 7th Battalion of 11th Gorkha Rifles in December 1984. He is a graduate of Defence Services Staff College, Wellington, and has attended the prestigious Higher Command and National Defence College courses. In his 38 years of distinguished military career, he has the distinction of donating challenging command and staff appointments in varied terrain. He has a vast experience in counterinsurgency, high altitude, glaciated, and desert terrains. He has commanded the 1st Battalion of 11th Gorkha Rifles in intense counterinsurgency environment in Jammu and Kashmir, an independent brigade group in the Run and Creek sector on Western Front, the counterinsurgency force in Jammu and Kashmir, and Trishakti Corps in the northeast. The General Officer has a rich experience by virtue of serving in varied instructional, staff, and regimental appointments, to include Colonel MO at Military Operations Directorate, Brigadier, Discipline and Vigilance, Adjutant General Branch in Integrated Headquarters of Ministry of Defence, Additional Director General of Military Operations, and Director General, Operational Logistics and Strategic Movement. He is also served as Deputy Commandant and Commandant of 11 Gorkha Rifles Regimental Center, and as Assistant Military Attaché at Pension Paying Office, Dharan, with the military wing at the Embassy of India in Nepal. The General Officer is also Colonel of the Regiment of 11 Gorkha Rifles. The General Officer is an alumnus of Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling. He is a keen trekker and mountaineer, having climbed Mount Rathong at a height of 22,000 feet.
Ladies and gentlemen, Lieutenant General Ajay Kumar Singh, Ati Vishish Seva Medal, Yudh Seva Medal, Sena Medal, Vishish Seva Medal, General Officer Commanding in Chief, Southern Command. Ladies and gentlemen, we are now awaiting the arrival of General Anil Chauhan, Param Vishish Seva Medal, Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Sena Medal, Vishish Seva Medal, Chief of Defence Staff. General Anil Chauhan is an alumnus of the National Defence Academy, Khadakwasla. He was commissioned into the 6th Battalion of the 11th Gorkha Rifles in June 1981 from Indian Military Academy, Dehradun. The officer has vast experience in operations across a wide spectrum of conflict and terrain profiles. He commanded an infantry battalion along the line of control in Jammu and Kashmir, a mountain brigade in Manipur, an infantry division in the Kashmir Valley, and a corps in the northeast. The general was General Officer Commanding in Chief, Eastern Command, from 1st September 2019 to 31st May 2021. Post his retirement from active military service, the general served as a military advisor to the National Security Council Secretariat from 20th October 2021 to 29th September 2022. General Chauhan's staff and instructional assignments include instructional tenure at Headquarter Indian Military Training Team, Bhutan, Military Observer on a United Nations mission to Angola, General Staff Officer 1 of a Mountain Division, Director, Perspective and Planning at Army Headquarter, Chief of Staff, Headquarter 15 Corps, and Director General of Discipline, Ceremonial and Welfare. He was the Director General of Military Operations during the Balakot airstrike. General Anil Chauhan is a graduate of the Defence Services Staff College, Wellington, the Higher Command and National Defence College courses. The officer, during the span of over 40 years of uniform service, has been decorated for distinguished service with the Param Vishish Seva Medal, Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Sena Medal and Vishish Seva Medal. Academically inclined, the general has authored 2 books, namely Aftermath of a Nuclear Attack and History of the 11th Gorkha Rifles Regimental Center, and has supervised the writing of History of the 19th Infantry Division. The general officer assumed the appointment of the Chief of Defence Staff on 30th September 2022. Ladies and gentlemen, General Anil Chauhan, Param Vishish Seva Medal, Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Sena Medal, Vishish Seva Medal, Chief of Defence Staff.
Ladies and gentlemen, we are now awaiting the arrival of Shri Ramesh Bais, the Governor of Maharashtra. Shri Ramesh Bais was sworn in as the Governor of Maharashtra on 18 Feb 2023, a respected name in the politics of erstwhile state of Madhya Pradesh and the present state of Chhattisgarh. Shri Ramesh Bais has more than 5 decades of experience in parliamentary politics, social work, and organizational work. He has held various responsibilities in public life, ranging from councillor, legislator, and parliamentarian to Union Minister of the state and now Governor. Born on 2nd August 1947, Mr. Ramesh Bais was educated in Raipur. In 1978, he was elected as councillor in Raipur Municipal Corporation. He was an elected member from Madhya Pradesh Legislative Council from 1980 to 1985. In 1989, Shri Ramesh Bais was elected to the Lok Sabha for the first time from Raipur. He went on to set the record of getting elected to Lok Sabha from Raipur for 7 consecutive terms. In 1998, Shri Ramesh Bais was appointed as Minister of State in the Ministry of Steel and Mines in the cabinet of Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. He has also held the portfolios of Chemical and Fertilizers, Information and Broadcasting, and Environment and Forest. From 2009 to 2015, Mr. Ramesh Bais was the Chief Whip of the Bharatiya Janata Party in the Lok Sabha. During the period from 2014 to 2019, when he was a member of the 16th Lok Sabha, he was the chairman of the Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment. Ladies and gentlemen, you are requested to rise when the band plays the tune of National Anthem. देवी और सज्जनों, राष्ट्रगान की धुन पर आप सभी से अनुरोध है कि आप सब खड़े हो जाएं। Ladies and gentlemen, Shri Ramesh Bais, the Governor of Maharashtra. Ladies and gentlemen, we are now awaiting the arrival of Smt Droupadi Murmu, President of India.
Smt Droupadi Murmu was sworn in as the 15th President of India on 25th July 2022. Previously, she was the Governor of Jharkhand from 2015 to 2021. She has devoted her life to empowering the downtrodden and the marginalized sections and deepening the democratic values. Born in Santali tribal family on 20 June 1958 at Uparbeda village, Mayurbhanj, Odisha, Srimati Murmu's early life was marked by hardships and struggle. She earned the degree of Bachelor of Arts from Rama Devi Women's College, Bhubaneswar, and became the first woman from her village to receive college education. From 1979 to 1983, Srimati Murmu served as a junior assistant in the Irrigation and Power Department, Government of Odisha. In 2000, Srimati Murmu was elected from the Rairangpur constituency as a member of Legislative Assembly of Odisha and State, Department of Commerce and Transport in the Government of Odisha from March 6, 2000 to August 6, 2002, Department of Fisheries and Animal Resources Development from August 6, 2002 to May 16, 2004. With her rich administrative experience and thanks to her efforts to spread education in tribal societies, she carved a special identity for herself. For her services as a legislator, she was awarded the Pandit Neelkant Das Best Legislator Award in 2007 by the Odisha Legislative Assembly. Srimati Murmu was appointed the Governor of Jharkhand on 18 May 2015. She was the first woman tribal governor of a tribal majority state, and she received wide appreciation for upholding the values of the Constitution and supporting the rights of tribal communities. Srimati Murmu was associated with several tribal socio-educational and cultural organizations of Odisha. She is an avid reader and has keen interest in spirituality. As President of India, Srimati Droupadi Murmu has traveled widely across the country. She has also traveled abroad to enhance India's global outreach and footprint. She visited the United Kingdom in 2022 and went to state visits to Suriname and Serbia in 2023. President Dropadi Murmu became the first Indian to receive Suriname's highest distinction, Grand Order of the Chain of the Yellow Star, and she dedicated this honor to the successive generations of the Indian Surinamese community. In 1981, Srimati Murmu married late Shyamcharan Murmu, who was an officer in a bank. She has a daughter, Srimati Itishri Murmu, and son-in-law, Shri Ganesh Hebron. देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रपति के आगमन पर कृपया खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान तक खड़े रहें. Ladies and gentlemen, on the arrival of the President, you are requested to rise and remain standing for the national anthem.
The number of our alumni who have been decorated in war is legion. Most of them have had their baptism in fire since the wars, since independence. Some where blizzards and snowstorms rule. Some where the wind blows full of sand. Some where the waves hold argument with the sky. And some in the uncharted space above. But like professional soldiers, they were conscious of the hazards of the profession they had chosen and were conscious of the contribution they were making to safeguard the sovereignty of our nation. In this long march to glory, our alumni have demonstrated exemplary courage and dedication, both in war and peace. They have defended our borders, kept the territorial waters safe for the nation, and touched its sky with glory. The list of our alumni who have distinguished themselves in war would read like a veritable who's who of Indian heroes. Till date, these heroes have been awarded 3 Paramveer Chakra, 32 Mahavir Chakra, 162 Veer Chakra, 12 Ashok Chakra, 45 Kirti Chakra, and 152 Shaurya Chakra. There are some whom we always remember with special fondness. Captain Gurbachan Singh Salaria, 9th Coast, Bravo Squadron. 2nd Lieutenant Arun Khetarpal, 38th Coast, Foxtrot Squadron. And Captain Manoj Kumar Pandey, 90th Coast, Mike Squadron. The reviewing officer will now review the parade. Leading the lineup is the contingent of Romeo Squadron, proudly carrying the Chiefs of Staff banner. The second contingent is of Quebec Squadron. The third contingent is of Hunter Squadron. The fourth contingent is of Lima Squadron. The fifth contingent is of November Squadron. The sixth contingent is of Foxtrot Squadron. The seventh contingent is of Juliet Squadron. The eighth contingent is of Oscar Squadron. The ninth contingent is of Golf Squadron. The Nishan Toli, proudly carrying the President's colors. The contingent of senior cadets. The 11th contingent is of Bravo Squadron. The 12th contingent is of Delta Squadron. The 13th contingent is of Kilo Squadron. The 14th contingent is of Mike Squadron. The 15th contingent is of Charlie Squadron. The 16th contingent is of India Squadron. The 17th contingent is of Panther Squadron.
Canteen contingent is of Alpha Squadron. The contingent of female cadets. Concluding the lineup is the appointments contingent led by Battalion Cadet Captain Sarthak. The list of achievements of National Defense Academy alumni is endless. Apart from gallantry in war, our alumni have displayed exemplary courage and self-sacrifice, even while driven away from the battlefield. The Ashok Chakra, the highest peacetime gallantry award winners of National Defense Academy are 2nd Lieutenant P.M. Raman, 6th Coast Alpha Squadron, Wing Commander Rakesh Sharma, 35th Coast Juliet Squadron, Colonel N.J. Nair, 38th Coast India Squadron, Major Sudhir Kumar Balia, 72nd Coast Juliet Squadron, Captain A.S. Jasrotia, 73rd Coast Echo Squadron, Major R.K. June, 78th Coast Kilo Squadron, 2nd Lieutenant Rakesh Singh, 79th Coast Bravo Squadron, 2nd Lieutenant Puneet Nath Dutt, 87th Coast Echo Squadron, Major Sandeep Unnikrishnan, 94th Coast Oscar Squadron. The cadets of National Defense Academy follow in the footsteps of some of our illustrious alumni who have scaled the highest peaks in the Himalayas, sailed around the world, and also done the country proud on the sports field. Some of those whom we mention with special pride are Wing Commander Rakesh Sharma, Ashok Chakra, the first Indian to enter space; Commander Dilip Dhonde, Shaurya Chakra, the first Indian solo circumnavigator of the globe; Captain H.D. Motiwala, who became the first Indian to be awarded the prestigious Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Dronacharya Award, and the Arjuna Award for yachting. Wing Commander Yashwant Anil Narayan Petkar swam across the English Channel twice, creating national and Asian record. Captain Atul Sinha and Lieutenant Commander Farooq Darapur represented India in yachting and sailing in the 16th Asian Games held in 2010 in China and won the silver medal. Captain Sinha, a Chhatrapati Shivaji Award recipient, also mentored Team Navika Sagar Parikrama and completed the Cape to Rio race in a record time of 20.8 days.
you can now see the cadets march forward to the martial tunes of Kadam Kadam Badhai Ja. Ladies and gentlemen, the parade is accompanied by flypast. The first one was the 3 Chetak helicopters. The formation was led by Group Captain Sai Kiran, 105th Course, Oscar Squadron. Along with him was Flight Lieutenant Ashish, 133rd Course, Delta Squadron. The second helicopter was flown by Wing Commander Gagan Sikri, 108th Course, Charlie Squadron, and co-piloted by Squadron Leader Praveen. The third helicopter was flown by Wing Commander Khushbu Gupta. Along with her was Flight Lieutenant Prithvi Raj, 138th Course, Kilo Squadron. The second flypast will be by 3 Super Dimona aircraft as the first squadron approaches the dais. The third flypast will be by 3 Su-30 aircraft as the Nishan is being carried off the parade ground. The first aircraft is piloted by Group Captain Aditya Bawa, 102nd Course, Foxtrot Squadron, and co-piloted by Flight Lieutenant Millen, 131st Course, Quebec Squadron. The second aircraft is flown by Group Captain APS Sand. Along with him is Flight Lieutenant Ankit Sharma. The third aircraft is flown by Squadron Guruvara, and along with him is Flight Lieutenant Saurav Pandey, 130th Course, November Squadron. The fourth flypast will be by 3 advanced light helicopters drove when the first set of 6 cadets crossed the quarter deck. The first helicopter will be flown by Colonel Omkar and co-piloted by Major Samrat, 128th Course, Juliet Squadron. The second helicopter is piloted by Lieutenant Colonel Rohit Raskana, 112th Course, Juliet Squadron, and co-piloted by Captain Mishal, 133rd Course, Foxtrot Squadron. In the third helicopter are Major Nithun and Captain Dheeraj, 131st Course, Golf Squadron. The fifth and the final flypast is by 3 Su-30 aircrafts again, when the entire parade crosses the Antim Pag. In all nations, martial music has accompanied feats of arms, serving the twofold purpose of inspiring the troops to fight and as a method of conveying orders. It was used in times of battle as a means of exciting that grand passion, which the fiercest of orations could not. Playing this inspiring music today, we have 4 bands. These bands are the National Defence Academy Military Band, led by Subedar S.G. Pandya, the National Defence Academy Pipe and Drums Band, led by Naab Subedar B.M. Kamble, the 24th Maratha Light Infantry Band, led by Subedar Sanjay Kumar, and the 1 EME Sikandrabad Band, led by Subedar San Chandradan. देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है कि जब निशान टोली निशान के साथ आपके सामने से गुजरे तब कृपया खड़े हों तथा जो वर्दी में हैं वे कृपया सैल्यूट कर निशान को सम्मान प्रदान करें. Ladies and gentlemen, when the Nishan Tori passes in front of you, you're requested to rise, and those in uniform will salute as a mark of respect for the President's colors. Following them is Squadron Cadet Captain Anup Singh, leading the
contingent of November Squadron. Up next is the contingent of Foxtrot Squadron, led by Squadron Cadet Captain Abhishek Kundeep. The contingent of Juliet Squadron, led by Squadron Cadet Captain Hemant Kumar. Following them is Squadron Cadet Captain Tanuj Kumar, leading the contingent of Oscar Squadron. The contingent of God Squadron, led by Squadron Cadet Captain Ayush Shah. The Nishan Tool, proudly carrying the President's colors. The contingent of senior cadets, led by Academy Cadet Adjutant Jatan Kumar. The contingent of Bravo Squadron, led by Squadron Cadet Captain Nishant. Squadron Cadet Captain Gurram Dilip, leading the contingent of Delta Squadron. The contingent of Kilo Squadron, led by Squadron Cadet Captain Ayush Kali. The contingent of Mike Squadron, led by Squadron Cadet Captain Abhishek Kumar. And here comes Squadron Cadet Captain Indish Vidra, leading the contingent of Charlie Squadron. And here is Squadron Cadet Captain Mayank Dhyani, leading the contingent of India Squadron. The contingent of Panther Squadron, led by Squadron Cadet Captain Devdutt Mullapalli. Squadron Cadet Captain Pavan Patil, leading the contingent of Alpha Squadron. And ladies and gentlemen, you're witnessing a historic moment as female cadets march past, saluting the President, led by Divisional Cadet Captain Bisni Abhishek. Concluding the lineup is the Appointments contingent, led by Battalion Cadet Captain Manish Shankar. And finally, Major Praveen Kumar Tiwari, Adjutant, National Defence Academy, saluting the reviewing officer on his charger, Reliant Robin. The cadets of this institution have been consistent in making the most of the excellent all-round training facilities available at the academy. One important aspect of training in National Defence Academy is the camps they attend during their second, fourth, and sixth term. The participation in these camps in the academy prepares them for
further military challenges and helps in building an overall sense of camaraderie, bond, team spirit, and quick adaptation to unknown and difficult conditions. Ladies and gentlemen, among various sports events which happened during Autumn Term 23, the inter-squadron volleyball competition was won by Panther Squadron. The inter-squadron football competition was won by Charlie Squadron. The inter-squadron boxing competition was won by Oscar Squadron. The inter-squadron squash competition was won by Panther Squadron. And the inter-squadron cross-country competition, which tests the physical and mental endurance of our young cadets, was won by Gall Squadron. Ladies and gentlemen, the equestrian training team of National Defence Academy has been performing exceedingly well in various equestrian and polo competitions at regional, services and national levels. This training team has won a total of 19 medals in the Army Equestrian Championship, which includes 6 gold, 5 silver, 8 bronze, and various highly recommended positions. Apart from individual gold and bronze medals, the cadets bagged various team medals as well. A total of 6 merit cards were awarded to cadets in Autumn Term 2023 on the basis of their exceptional performance in riding. Ladies and gentlemen, it goes without saying that the primary aim of this institution is to produce military leaders. The results of the training here are seen in the many wars India has fought over the years and the senior appointments achieved by the alumni. The National Defence Academy can take justifiable pride in the fact that its alumni have brought glory to themselves and their alma mater on the battlefield time and again. The number of gallantry awards won by our alumni is ample testimony to this fact. We are happy that our cadets do us proud, not only on the battlefield but on the sports field as well. Ladies and gentlemen, when the band plays the tunes of the national anthem, you're requested to rise. देवियों और सज्जनों, राष्ट्रगान की धुन पर कृपया खड़े हो जाएं।
Ladies and gentlemen, as you look to the extreme left, you can see Divisional Cadet Captain S. Logeshwar from Romeo Squadron coming to hand over the Chiefs of Staff banner to Drill Instructor Company Havaldar Major Pankaj Thakur of the 23rd Punjab Regiment, who is receiving this on behalf of the Academy, so that it can now be presented to the squadron that has won the championship this term. Earlier, we had the Commandant's banner for the champion squadron. The Chiefs of Staff banner was instituted during autumn term 1980. Bravo Squadron was the first to win it then. Ladies and gentlemen, on today's parade, we have both male and female cadets as cane pilots. These cadets are Cadet Kovan Shinde, Cadet Hardik Saini, Cadet Northern Mite, Cadet Suryadev, Cadet Shambhavi Singh, and Cadet Shriti Daksh. The reviewing officer will present medals to the award winners in a short while. The President's Gold Medal for standing first in overall order of merit is awarded to Battalion Cadet Captain Pratham Singh of Gaul Squadron. The President's Silver Medal for standing second in overall order of merit is awarded to Academy Cadet Adjutant Chatan Kumar of November Squadron. The President's Bronze Medal for standing third in overall order of merit goes to Battalion Cadet Adjutant Harshvardhan Shailesh Bhosle of Gaul Squadron. Winner of Chiefs of Staff banner, Juliet Squadron. चीफ ऑफ स्टाफ बैनर उस स्क्वाड्रन को प्रदान किया जाता है जो ओवरऑल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। चैंपियनशिप का फैसला टर्म के दौरान आयोजित विभिन्न अंतर स्क्वाड्रन प्रतियोगिताओं में स्क्वाड्रन द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। The Chiefs of Staff banner is awarded to the squadron standing first in overall championship. The championship is decided on the basis of points gained by the squadron in various inter-squadron competitions held during the term. Squadron Cadet Captain Hemant Kumar of Juliet Squadron received the Chiefs of Staff banner. The pride of these four young men is evident as they march forward to receive their well-deserved awards. The training at National Defence Academy inculcates in cadets qualities of leadership and a drive to excel. A cadet is transformed into an officer and a gentleman over the 3 years that he trains at the National Defence Academy. Ladies and gentlemen, as you can see, a carrier belt is being slung over the shoulder of Squadron Cadet Captain Hemant Kumar of Juliet Squadron so that he can now receive the coveted Chiefs of Staff banner.
The reviewing officer is now requested to present medals to the award winners and the Chiefs of Staff banner to the champion squadron of this term. The President's Gold Medal is awarded to Battalion Cadet Captain Pratham Singh of Gold Squadron. The President's Silver Medal is awarded to Academy Cadet Adjutant Jatin Kumar of November Squadron. The President's Bronze Medal goes to Battalion Cadet Adjutant Harshvardhan Shailesh Bhosle of Gold Squadron. Winner of Chiefs of Staff banner, Juliet Squadron. इन कैडेटों ने न केवल अपने स्क्वाड्रन का नाम गौरवान्वित किया है, बल्कि अपने माता पिता का शीश भी गर्व से ऊंचा कर दिया है। जूलियट स्क्वाड्रन के कैडेटों के लिए भी ये अत्यंत हर्ष व उल्लास का समय है कि उन्होंने पढ़ाई, शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद व क्वायत जैसी गतिविधियों में अपनी महारत साबित कर चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रतिष्ठित ध्वज को प्राप्त किया है। चैंपियन स्क्वाड्रन होने के कारण जूलियट स्क्वाड्रन के कैडेट अब दाहिने कंधे पर लैनेट लगाने के साथ साथ अपने स्क्वाड्रन भवन के आगे 2 समारोहिक तोपें भी रख सकते हैं। साथ ही वे अपने स्क्वाड्रन भवन पर चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रतिष्ठित ध्वज को फहरा भी सकते हैं। The reviewing officer is requested to kindly address the parade. महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश वैस जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, नेशनल डिफेंस के कमांडेंट वाइस एडमिरल अजय काचर जी, अधिकारी और कर्मचारीगण, कैडेट्स के माता पिता और अभिभावक, अतिथिगण, परेड में उपस्थित सभी कैडेट्स, देवियों और स्वजनों। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें कोर्स के पासिंग आउट परेड के इस समारोह में भाग लेकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज इन युवा कैडेट्स को देखकर मेरा हृदय गर्व से भर गया है। कैडेट्स का उत्कृष्ट और अनुशासित ड्रिल बहुत ही सराहनीय और गौरवान्वित करने वाला है। मैं आज पास आउट हो रहे सभी कैडेट्स को उनकी शानदार परेड्स के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं पदक प्राप्त करने वाले तीनों कैडेट्स और चीफ ऑफ स्टाफ बैनर प्राप्त करने वाले जूलियट स्क्वाड्रन को विशेष बधाई देती हूँ। मैं उन सभी अधिकारियों और प्रशिक्षकों की भी सराहना करती हूँ
जिनके अथक परिश्रम ने कैडेट्स की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है। मैं कैडेट्स के माता पिता को भी बधाई देती हूँ, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया और उनको देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करने की प्रेरणा दी। भारत माता के महान सपूत मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अरुण क्षेत्रपाल के नाम पर इस परेड ग्राउंड का नाम रखा गया है। इस नामकरण के मूल में नेशनल डिफेंस एकेडमी की आदर्शवादी सोच है, जो मातृभूमि के लिए सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रेरित करती है। मैं देश प्रेम से ओतप्रोत इस परंपरा को सुदृढ़ बनाने के लिए एनडीए के वर्तमान और पूर्ववर्ती टीम मेंबर्स की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2022 से एनडीए में महिलाओं का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। आज पहली बार एनडीए की पासिंग आउट परेड में महिला कैडेट्स ने मार्चिंग कॉन्टिजेंट के रूप में हिस्सा लिया है। ये दिन सही अर्थों में ऐतिहासिक है। मुझे विश्वास है कि सभी महिला कैडेट्स भविष्य में देश का और एनडीए का नाम नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। आज भी बेटियों को अपनी पसंद का करियर चुनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए सभी महिला कैडेट्स को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मैं आज पास आउट होने वाले सभी फॉरेन कैडेट्स को भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे आशा है कि इस ट्रेनिंग के दौरान आपने अच्छे मित्र भी बनाए होंगे और आप भारत खासकर एनडीए में बिताए ये दिन हमेशा याद रहेंगे। प्रिय कैडेट्स, इस क्रेडल ऑफ लीडरशिप ने ऐसे महान योद्धाओं को जन्म दिया है जो राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस एकेडमी का देश के सर्वोत्तम प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष स्थान है और ये सशस्त्र बलों तथा देश के लिए एक सुदृढ़ स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित है। इस एकेडमी से पास आउट होने वाले सभी अधिकारी देश की अथक सेवा में समर्थ हैं। एनडीए से प्राप्त किए गए प्रशिक्षण और जीवन मूल्य आपको जीवन में आगे बढ़ने में सदैव मदद करते हैं। आप सब हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ कार्य करते हैं। यही कारण है कि एनडीए के पूर्व छात्र सर्वोच्च पदों पर कार्यरत हैं। ये अपना कर्तव्य उत्तम रूप से निभा रहे हैं और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि में के लिए उसकी सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा आवश्यक है। हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मानते हैं, परंतु हमारी सेनाएं देश की एकता और अखंडता पर चोट पहुंचाने वाली किसी भी बाहरी या भीतरी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है और तत्पर है। प्रिय कैडेट्स, आप देश के वीर सेनानी हैं। आपको भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए नई टेक्निकों को सीखकर उन्हें अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा। आपको आपके सीनियर्स के अदम्य साहस और बलिदान को याद रखते हुए देश की सेवा में अग्रसर रहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप साहस और शौर्य के साथ सशस्त्र सेवाओं के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए हर बाधा का डटकर सामना करेंगे। अंत में सभी कैडेट्स, विशेषकर पदक विजेताओं को मैं फिर से बधाई देती हूँ। आप सबके स्वर्णिम भविष्य के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। आपके हौसलों को नित नई उड़ान मिले तथा आप देश के गौरव को और अधिक बढ़ाएं, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। यही मंगल कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
देवियों और सज्जनों निशान टोली निशान को परेड प्रांगण से बाहर ले जा रही है। आपसे अनुरोध है कि निशान को सम्मान प्रदान करने हेतु कृपया खड़े हो जाएं और जो वर्दी में है वह अकादमी कैडेट कप्तान की कमांड पर सल्यूट करें। The President's Color Award is one of the highest honor that is bestowed upon any military unit. It is also known as Rashtrapati Ka Nishan in Hindi. A special flag known as the Nishan is given to the unit as part of the award. The President's Color Award is a prestigious honor awarded by the President, the Supreme Commander of the Armed Forces of India, to the Armed Forces unit that has rendered exceptional service to the nation. While the practice of carrying colors into battle has stopped, the tradition of receiving, holding, and parading the color continues even today in the Indian Armed Forces. Behold, ladies and gentlemen, please look ahead. You can see 3 Su-30 aircraft approaching the quarterdeck. अब कैडेट परेड की समाप्ति के लिए अपना अपना स्थान ले रहे हैं। दीक्षांत समारोह का गौरव व गरिमा से पूर्ण अवसर कैडेटों के 3 वर्षों के कठिन परिश्रम का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। The cadets are now forming up in preparation for the culmination of the parade.
The cadets of the passing out course will proceed towards the Antim Pug at the quarterdeck. The Antim Pug is marked at the quarterdeck, which symbolizes the passing out of cadets of the 145th course. Later, when the band will play the lilting tune of All Lang Syne, which will take most of you down the memory lane, the junior cadets will go back to the quartermaster's fort away from you, and the cadets of the passing out course will march towards the quarterdeck. The parade will culminate with cadets of the passing out course and the junior courses forming up and marching slow. Crossing the threshold of the quarterdeck enables them to join the galaxy of National Defense Academy alumni. This is a day of mixed sentiments. The joy of success and sorrow of separation stand as a testimony to the firm concepts of discipline and determination, which molds them as young leaders. The passing out parade is a moment of retrospection to see how discipline has shaped our young cadets. Discipline has always been the bedrock of training at the National Defense Academy. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and days of all lang syne? These lines are a fitting tribute to the days gone by of lifelong friendship and unbreakable bonds between the cadets of the tri-services established at the National Defense Academy during their years of training. The cadets pass out of National Defense Academy for the second lap of their journey in different academies, but with a deep sense of connection between them, developed at their alma mater. The junior cadets are now marching back towards the quartermaster's fort, while the cadets of the 145th course march towards the quarterdeck. They will step on the quarterdeck, salute the national flag, and bid farewell to the academy, their home for the past 3 years. Ladies and gentlemen, now you're going to witness the flypast by 3 ALH Dhruv in Rudra formation. सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही टहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। शूलों को मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। आज 145 कोर्स के कैडेट्स इसी दृढ़ निश्चय व इन्हीं फौलादी इरादों के साथ जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं।
If you look to the left and to the right of the quarterdeck, you will see the cadets manning the Jacob's ladder on the quarterdeck mast. These cadets belong to the first term of the academy. They will cheer the cadets of the passing out course. There'll be a fly past to honor the success of the passing out course. It is this discipline and loyalty that the nation is proud of in every warrior, which are painstakingly developed and ingrained here at the National Defence Academy. National Defence Academy stands for traditions built over years of experience, with excellence through training and hard work. Culture growing out of such traditions has molded every generation of cadets in a uniform pattern. Ladies and gentlemen, in view of the solemnity of the occasion, we request you to remain seated while the passing out course cadets are in the process of taking formal leave of the academy. You're requested to leave the parade ground only after the reviewing officer and other senior dignitaries have departed. देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है कि जब पासिंग आउट कोर्स के कैडेट धीरे चाल से क्वार्टर डेक से गुजरे, तब अपना स्थान तब तक न छोड़ें जब तक मुख्य अतिथि प्रस्थान न करें. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hatred, and yet don't look too good, nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet to triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make good trap of fools, or watch the things you gave your life to, broken and stoop, but build them up with worn-out tools. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, not lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you. If all men count with you, but none too much. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run. Yours is the earth and everything that's in it. And which is more you, you'll be a man, my son. Being an officer, above all, means being a leader of men. National Defence Academy is the ideal opportunity for young cadets to imbibe important aspects of leadership like courage, stamina, team spirit, physical fitness, mental toughness, and the will to win. This value system is very faithfully upheld by all the cadets of the academy. In fact, they tend to develop a motto which says, winning is not everything. It is the only thing. And so, we bid adieu to the 145th course, wishing them well in their journey ahead. Ladies and gentlemen, the Academy Cadet Adjutant and the Academy Cadet Captain are now approaching the quarterdeck. Ladies and gentlemen, if you look straight ahead, you'll see 3 Su-30 aircraft approaching the quarterdeck, bidding farewell to the passing out course. The fragrance in the air of the National Defence Academy is enough
to raise a storm of nostalgia in the minds of not only its alumni but also those who have had a sojourn here. The passing out parade is thus not the end, but a beginning. Ladies and gentlemen, this is your commentary team signing off. The members of the commentary team are Lieutenant Commander Sandhya Tiwari, Lieutenant Anushil Kumar, Dr. Anshu Shekhawat, Dr. Bhavna Singh, Cadet Mohit Kumar Mishra, Cadet Utsav Rai, Cadet Garvit Kohli, Cadet Jaishnu Thakuria, Cadet Swayam Sahu, Cadet Vardhan Upreti, Cadet Nakul Singh Rathod, Cadet Hridya S. Nayak, and Cadet Sarthak Yadav. The PRO team includes Major Rohit Best, Major Sushmita S. Warrior, Lieutenant R.R. Tripathi, and Major Anup Bhatt. लोकतंत्र की परिकल्पना सबसे पहले भारत भूमि पर ही साकार हुई थी। लोकतंत्र में सरकारें चुनने का अधिकार केवल जनता का होता है और भारत के लोकतंत्र का जो दुनिया में विशेष स्थान है, उसकी ये पहचान और लोकतंत्र की शान दुनिया को चमत्कृत करती रहती है। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण अध्याय तब जुड़ा जब पिछले वर्ष देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपना कार्यभार संभाला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पहली बार एक आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार ओडिशा के मयूरभंज जिले के संथाल परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद तक का सफर उनके संघर्ष की कहानी बताता है। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने के बाद आपने ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी की। कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर आपने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। एक शिक्षक के तौर पर अपने क्षेत्र में उन्हें एक नई पहचान मिली। जाके क्या बनना चाहती हो? टीचर। वेरी गुड। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला।
ऑफिसर को बनाने वाला, आईपीएस को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला, टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला, इसलिए टीचर सदा नमस्य होते हैं। इस तरह जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। पहली बार विधायक बनने के बाद आपने साल 2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। आपको ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2015 में आपको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है। सन 1958 में जन्मी द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। महिलाओं के विकास में ही देश का विकास निहित है। महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में ही भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। जय हिंद, जय भारत। जहां आपका राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो वहीं विकास की धारा में दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लोगों के लिए भी आत्मसम्मान का एक नया संबल है। The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. The freedoms enjoyed, the availability of opportunities, rights, duties, all stem from the principles of governance adopted. When India chose to become a republic, it was as a recognition of the importance of the power of the people in choosing their representatives and governing through them. Our nation is heterogeneous in composition. Its culture, climate, economic diversity makes its challenges and strengths extremely unique. And here, children excited, Kartavya Path and its surrounding vistas central to today's parade. It is, of course, a labor of love and pride for all agencies who have worked here to make this event so special. गणतंत्र दिवस परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति का अविस्मरणीय प्रदर्शन होता है और इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को पूर्णता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट। हवा में गर्जना करते उन्नत विमान भव्य राष्ट्रपति भवन के ऊपर से होते हुए जब कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं तो यहाँ मौजूद हजारों अतिथियों को देश प्रेम और रोमांच की पराकाष्ठा का एहसास होता है। इस साल की परेड के आकर्षक फ्लाई पास्ट में 50 वायुयान भाग ले रहे हैं, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और परिवहन विमान भी शामिल हैं। देश की वायु सीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स ने लगातार कठिन अभ्यास की बदौलत आज आयोजित होने वाले फ्लाई पास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस के गौरवशाली प्रदर्शन को समेटे गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य फ्लाई पास्ट। इस ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट में 44 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे आकाश में साहसिक करतब। कर्तव्य पथ साक्षी बनेगा जैगुआर, सुखोई, अपाचे और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का।
इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की होगी खास थीम, जो देगी विशेष संदेश। सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन। इसमें 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर तीनों सेना के झंडे और भारतीय तिरंगे को लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे। इसके बाद पारी होगी रुद्र की। फर्स्ट आर्मी व्हीकुलर कंटिजेंट के ठीक ऊपर 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण करतब। 1000 फीट की ऊंचाई पर 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन। ये शक्ति और साहस का प्रतीक होगा। एयर शो का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा गणतंत्र दिवस परेड के बाद। सबसे पहले बारी होगी प्रचंड फॉर्मेशन की। इसमें एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, 2 अपाचे और 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जोश और जुनून को चरम पर ले जाएंगे। इसके बाद अगले कुछ मिनट तक आसमान में हैरत अंगेज कारनामों से आपको रोमांच से सराबोर करने के लिए वायु योद्धा पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन। इसमें शामिल होंगे 5 सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। उन्नीस 1971 के युद्ध में टंगेल में एयर ड्रॉप की याद में एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉनियर एयरक्राफ्ट बनाएंगे फॉर्मेशन टंगेल। रोमांच और उत्साह उस समय और बढ़ जाएगा जब जाबाज वायु योद्धा आकाश में पेश करेंगे बजरंग फॉर्मेशन। इसमें होंगे 1C-130 और 4 राफेल। इसके बाद 4 राफेल लड़ाकू विमान और एक बोइंग E-7 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम करतब दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे नेत्रा फॉर्मेशन में। जोश अपने चरम पर होगा जब वायु सैन्य शक्ति में इजाफा करने वाले एक C-17 और 2 सुखोई 30 मिलकर बनाएंगे भीम फॉर्मेशन। आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब 6 जैगवार विमान बनाएंगे फॉर्मेशन अमृत। सबसे अंत में होगा विजय फॉर्मेशन। इसमें एक राफेल विमान वर्टिकल चार्ली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्रमुग्ध। तो इंतजार कीजिए उस रोमांचित और भव्य फ्लाई पास्ट का। The Indian Air Force, considered one of the stronger air power forces in the world, our men and women in blue, in keeping with their motto, will also touch the sky with glory here at the Republic Day Parade. From the showering of flower petals as the parade begins to the much-awaited breathtaking finale, the fly past towards the closure of the parade, 45 Indian Air Force aircraft, 1 from the Indian Navy and 4 helicopters from the Indian Army will participate in today's parade. So a misty morning here in New Delhi. The wind chill factor seems to be picking up. In fact, the day dawned and it was anticipated that the sun would shine very clearly quite early. But you know how it is with the weather gods. And here, I'm sure people who haven't brought their headgear with them are regretting the fact the mist seems to be giving a very romantic hue to this whole vista. Before the parade begins, the
Prime Minister will be laying a wreath as homage to our brave warriors who laid down their lives fighting for the country. And of course, as we earlier shared with you, the arrangements, a lot of effort has gone into making the arrangements here. We have the communication for the fly-past control and coordination being done by the 1 Air Force Formation Signal Regiment's Communication and Control Center under the leadership of the regiment's commanding officer, Colonel Manjunath Raju. Work, effort, training, and discipline. There is, of course, the All India Radio commentary, which will go live. The CPWD has also worked very hard. And the exceptional quality of the sound system that covers Kartavya Path has been arranged by the 1 Army Headquarters Signal Regiment Center under the command of Colonel Rajkumar Mishra, with Lieutenant Colonel Reddy as the officer commanding Public Address Section. Army known for ensuring that enough practice, enough discipline goes into bringing about perfection. And this is a program, this is a celebration, which is a national celebration. And visual images have an impactful way of imprinting themselves on our mind. And many images, in fact, today will continue to endure over time and form lasting memories. कर्तव्य पथ पर इस बार इंतजाम बेहतर और काफी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सभी की व्यवस्था की गई है। पूरे कर्तव्य पथ पर 10 LED स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं और ये सलामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप बनाया गया है। विश्व शांति और एकता का प्रतीक हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत सरकार ने ये चिन्ह 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया। वसुधैव कुटुंबकम, भारत का मानचित्र और राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सभी इसी राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देखे जा सकते हैं। इसी के नजदीक सैन्य बैंड वादकों का दल है जो राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। मिलिट्री बैंड दस्ते की कमान संभाली है सूबेदार मदन सिंह ने और पाइप और ड्रम बैंड सूबेदार मेजर बसवराज बग्गे की कमान में। गणतंत्र दिवस समारोह में 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में दी जाएगी। नायब सूबेदार अनूप सिंह गन पोजीशन ऑफिसर हैं। इस बार विशेष बात यह है कि जिन तोपों से ये सलामी दी जाएगी उनका निर्माण देश में ही किया गया है। 105 mm लाइट फील्ड गन से सलामी दी जाएगी। इस गन ने ब्रिटिश मेड 25 पाउंडर गन की जगह ली है। मेक इन इंडिया की एक धमाकेदार पहल। आज की परेड में माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन पर भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। कर्तव्य पथ पहले से निखरा हुआ, संवरा हुआ, जहां सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, यहां सभी ने अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। दूरदर्शन की तैयारी भी बेहतर को और बेहतर बनाने की है। A picture speaks 1,000 words. And Doordarshan ensure its viewers that they feel the picture-perfect live telecast of 74th Republic Day Parade 2023. To ensure the seamless and smooth live telecast to you. All in magnificence, Team Doordarshan working tirelessly. For this, Doordarshan has placed 60 high-definition, latest state-of-the-art facility cameras at different positions. From Rashtrapati Bhavan to National War Memorial. 2 PTZ camera placed inside presidential enclosure to capture the close-up of VVIPs. 1 PTZ has been placed on top of retractable roof of presidential enclosure. For a versatile and the bigger picture of Kartavya Path. 2 Jimmy Chips
and one 180-degree fisheye camera to ensure each and every moments will be captured. 15 cameras have been installed at National War Memorial. We have 2 Jimmy Jibs at NWM. Strategically placed on the top of the crane at India Gate, and 3 cameras on the top of India Gate both sides. At Rashtrapati Bhavan, there are 10 cameras with Jimmy Jib near Burji of North Block, 2 at the dome of Rashtrapati Bhavan. The 60 cameras are supported and interlinked by high-definition OB vans placed at Kartavya Path, National War Memorial and Rashtrapati Bhavan. These are linked by optical fiber and satellite connectivity to a production control room with magnificent monitor wall setup at Kartavya Path. For this live telecast, the overall in charge is Usha Pawar. Engineering in charge, Abhishek Agrawal. Program in charge, Anup Khajuria. And it's being produced by Jitendra Singh Chauhan. On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. वीको वज्रदंती, इतना झाग नहीं, शायद टेस्ट नहीं, लेकिन आपके गम प्रॉब्लम्स पर असर सही। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांत रखे हेल्दी। मजेदार नहीं, असरदार। वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC. अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. An important marker of the start of the Republic Day parade is the customary homage paid by the Prime Minister as he leads the nation in paying tribute to the martyrs at the National War Memorial. An inter-services guard is formed by 7 soldiers representing the armed forces, and this year will be commanded by an Air Force officer, Squadron Leader Akash Gangas. A war memorial is a building, monument, statue or an edifice to celebrate a war or victory or to commemorate those who died or were injured in war. Since independence, more than 26,000 soldiers of the Indian Armed Forces have made the supreme sacrifice to defend the sovereignty and integrity of the country, and the National War Memorial represents the gratitude of a nation to its armed forces. This memorial has a distinct scheme of concentric circles wherein you've got the Amar Chakra, circle of immortality, the Veer Tar Chakra, which is the circle of bravery, the Tyag Chakra, or the circle of sacrifice, and the Raksha Chakra, which is the circle of protection. You can see the names here of the 26,000 soldiers who have made the supreme sacrifice, embossed in gold on granite tablets. The memorial complex is in harmony with the existing layout and symmetry of the majestic
Kartavya Path and Central Vista, solemnity of the ambience is maintained with an emphasis on landscaping and simplicity of architecture. Apart from the main memorial, there is a dedicated area for the busts of soldiers who've been conferred with the Paramveer Chakra, the nation's highest gallantry award. The design of the main memorial exemplifies the supreme sacrifice made by a soldier in the line of duty, not only making him immortal, but also depicting that the spirit of the soldier remains eternal. The covered gallery that exhibits 6 murals crafted in bronze depicting the valiant battle actions of the armed forces. राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्थित परम योद्धा स्थल उन जांबाज शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेष सम्मान दिया गया है। परम योद्धा स्थल में यहाँ पर सभी परमवीर चक्र विजेताओं की कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। लगभग 40 एकड़ तक फैला है ये परम योद्धा स्थल। भारतीय सेना की वीरता, शौर्य, असाधारण योगदान की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन और उसकी याद दिलाता ये राष्ट्रीय समर स्मारक। हजारों अमर शहीदों को समर्पित ये राष्ट्रीय समर स्मारक देशवासियों के लिए सैनिकों की ओर से एक संदेश है कि सीमाओं पर हमारे प्रहरी अडिग हैं, मुस्तैद हैं और इसीलिए देशवासी सुरक्षित हैं। यह स्मारक संपूर्ण राष्ट्र की ओर से अपने जांबाज शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि का भी परिचायक है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन, बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। ये बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहाँ परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है।
Time moves on, leaving in its wake stories, memories, and heroes. And here at the National War Memorial, we commemorate those countless unsung warriors who gave their today for our tomorrow, their sacrifice given selflessly, soulfully, and seamlessly. In fact, the call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country, and that's what makes this sacrifice so supreme, because the call a soldier answers raises no doubt, no question. राष्ट्रीय समर स्मारक स्वतंत्रता के बाद से हमारे वीर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान का प्रमाण है और प्रतीक भी। स्मारक में एक शाश्वत ज्योति है जो अमर जवान के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। पिछले वर्ष इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का स्मारक की शाश्वत ज्योति में पूरे सैन्य सम्मान के साथ विलय कर दिया गया था। हमारे वीर सैनिक जिनके त्याग और बलिदान के कारण हम सुरक्षित हैं, हम घरों में चैन से सोते हैं, क्योंकि ये सीमाओं पर मुस्तैद हैं, जागते हैं और सर्वोच्च बलिदान करने से कभी पीछे नहीं हटते। इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। अमर जवान को नमन। Amar Jawan, etched in gold, fire sacred and pure, rising from the depths of substance. The nation, its safety, integrity, and protection come first, always and every time, for our soldiers. In fact, leadership, they say, is practiced not so much in words as in attitude. An attitude colors your thoughts, words, and actions constantly, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication, and valor is leadership in its finest form. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has arrived here at the memorial, and before the parade begins, Prime Minister Narendra Modi, on behalf of a grateful nation, will pay homage to the Amar Jawan, the immortal soldier, at the National War Memorial here, which is near India Gate. The three service flags and the national flag catching the morning breeze. Harmonizing seamlessly with the surroundings, the four concentric circles hold with reverence at their center an obelisk in which burns the eternal flame representing the immortal soldier. राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक तक पहुंचेगा और वे देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। एक बहुत ही भावुक क्षण होता है जब हम देश के अमर सपूतों को, जांबाजों को याद करते हैं, और खास तौर पर इस गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर। Indeed, a solemn homage by a grateful nation at a national monument built to honor and remember and respect our soldiers. As soon as the Prime Minister alights at the National War Memorial, he will then be escorted to the area where he will place the wreath after having met the three chiefs, the Chief of Defence Staff, the Raksha Mantri, and the Rajya Raksha Mantri, the Defence Secretary, and other dignitaries who were present there. A solemn homage, a very poignant moment when the entire nation will unite in the spirit of respect, gratitude, and patriotism. And our first glimpse of the Honorable Prime Minister as he's seated in his vehicle and soon to alight, his beautiful turban with all the colors that really represent the diversity of our country.
greeting the three chiefs, the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff, Admiral Hari Kumar, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. The sacrifices of our soldiers did not go in vain, as a grateful country stands now to honor and respect the supreme sacrifice made by thousands of soldiers. Thereafter, the buglers will sound the rouse and the guards will present the Salami Shastra again. The Inter-Services Guard, formed by 7 soldiers representing the armed forces, this year commanded by an Air Force officer, squadron leader Akash Gangas. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। उनका स्वागत किया विधिवत तौर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अंतर्जनगण सलामी शस्त्र अंतर्जनगण शोक शस्त्र
Guards, अंदर चले guard, सलामी, शस्त्र. अंदर चले guard, बचाओ, शस्त्र. The buglers sounding the rouse, and the guard commander, squadron leader Akash Ganghas, ordering Salami Shastra or salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence, eclipsing words, till nothing is heard. Peaceful, tranquil, some hearts beating, but some now still. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life with no beginning, no end, and the evergreens used in the wreath signifying everlasting life. In the words of Adlai Stevenson, patriotism is not short, frenzied bursts of emotion, but the tranquil dedication of a lifetime. And that's what it is for our men and women in uniform. The Prime Minister now moving towards where the digital ceremonial book is there to inscribe his feelings. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे इन वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा सर्वोच्च बलिदान देकर की है। तन और मन समर्पित करने के बाद प्राण भी समर्पित कर दिए इन अमर शहीदों ने। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें तुम्हें याद करते हुए। तुम तो मुझे जानते न थे, मैं भी तुमसे मिला न था। भला अपरिचित के लिए क्या ऐसा भी कोई करता है? हाँ, तुम्हारा मेरा एक अटूट रिश्ता है। हमारी मातृभूमि एक है। भावनाओं का ज्वार मन में उठता हुआ मौन भी शब्द बन जाते हैं। अमर जवानों का स्मरण, उन वीरों को नमन जो लौट के घर न आए। माननीय प्रधानमंत्री अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार दर्ज करते हुए। Today, national pride colors all celebration. The Indian tricolor, a symbol that brings us all together, that unites us as we bow our heads in reverence and gratitude to all our men and women in uniform who put duty before desire, nation above personal gain, and pride in serving the country before any other notion of comfort. And here at the National War Memorial in New Delhi, as the Prime Minister a short while ago paid homage to the Amar Jawan, the immortal soldier, the flame of sacrifice, valor and courage burns strong, giving life to tribute, light to inspiration, and love to national pride. Leadership, they say, is not about standing out, it's about hanging in, not giving up when the odds are stacked against you. And every martyr that we honor today exemplifies this quality. True respect belongs to those who don't think twice about fighting for that which they believe in with all their heart. Raksha Mantri, seeing the Prime Minister off from the National War Memorial, and now all action will shift and all attention will move to Kartavya Path at the saluting base. माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। कुछ ही देर में वो गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। कर्तव्य पथ जहां अब से थोड़ी ही देर में
74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शानदार परेड और हमारी सांस्कृतिक विरासत की झांकियां होंगी। आज सुबह धुंध छाई हुई है, लेकिन माहौल और वातावरण जोश से भरा हुआ। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर कर्तव्य पथ सजा धजा नए रूप में निखरा हुआ और ये दृश्य राष्ट्रपति भवन के, जहां से माननीय राष्ट्रपति जी कुछ ही देर में यहां से प्रस्थान करेंगी। And here we can see the first glimpse of our President, Smt Droupadi Murmu, along with our honored chief guest, His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, leaving Rashtrapati Bhavan. राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल से देश की राष्ट्रपति, देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदय और आज के समारोह के मुख्य अतिथि को समारोह पूर्वक एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर और एडीसी मेजर रोहन सुधाकर चौहान और एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा। राष्ट्रपति भवन के फोर्ट कोर्ट का भव्य प्रांगण एक उत्सव के माहौल में परिवर्तित होता हुआ परंपरागत तौर पर विशिष्ट अतिथि का स्वागत और उनका सम्मान और साथ में देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। The President's bodyguard ready to salute their Supreme Commander. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। The President and our chief guest for today's parade will now board the vehicle to slowly reach the saluting base. The Commandant of the President's bodyguard, Colonel Anup Tiwari, will be riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen mounted on his charger Glorious. And to the left of the President's car will be the second in command of the regiment, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav, mounted on his charger Sultan. Specially placed cameras over here at the majestic forecourt of Rashtrapati Bhavan, where ceremonial welcomes are given to visiting heads of state. And today, all dressed up as India celebrates its 74th Republic Day, the official residence of the President of India. The President's bodyguard, the senior-most cavalry regiment, it carries out mounted ceremonial duties for the President, and its officers and men are excellent horsemen, trained tankmen, and
paratroopers. On either side, tinkling fountains, adding to the air of festivity, ceremony, and grandeur. And there, right in front, we can see the central dome. And here we come back to Kartavya Path, where the Prime Minister has arrived at the saluting base. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सलामी मंच के सामने मौजूद प्रधानमंत्री का आगमन और जाहिर सी बात है बहुत उत्साह करतल ध्वनि यहाँ जनसमूह में बहुत उत्साह The Prime Minister being introduced to the Chief of Defence Staff, the 3 service chiefs, and all the other dignitaries here. And it's definitely an exciting moment for all the viewers who have specially come here. I think for many of them, it's the first time a close-up view of the people who govern them. The Prime Minister moving into the 2 enclosures on either side of the saluting base, greeting people, making a personal connect, and warming the weather, the hearts, and of course, the feelings. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह मौजूद, साथ में राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विशिष्ट अतिथिगण आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा कर्तव्य पथ पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और यहां रायसीना पहाड़ी से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है सधे हुए कदमों से। रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के ये अश्वारोही दुनिया में अपनी तरह का अनोखा दस्ता, गौरवशाली परंपरा और देश प्रेम संकल्प की अनोखी मिसाल, भारतीय राष्ट्र राज्य को नई ताकत देने का एहसास। राष्ट्रपति अंगरक्षक 46 घुड़सवारों का ये दस्ता, राष्ट्रपति अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी और ये उनकी स्थापना का 250वां वर्ष है।
the chief guest, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, have arrived. देवी और सज्जनों माननीय An arrival at the saluting base of the President of India, Smt Droupadi Murmu. And along with her, the honored guest for today's Republic Day celebrations, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt. And we warmly welcome them. 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी का परिचय इस समय सलामी मंच के सामने मौजूद तीनों सेना प्रमुखों और विशिष्ट अतिथिगणों से कराया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य मंच पर पहुंचते हुए In a short while from now, a 21-gun salute will be given, presented by the ceremonial battery of 871 Field Regiment. As Rajpath will resonate to the 21-gun salute, the national anthem will echo. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्यम तक। राष्ट्रपति अंगरक्षक सेक्शन 5 कदम कदम। The President's bodyguard now move away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony to escort the Supreme Commander, the President of India, to an official residence, the Rashtrapati Bhavan. And it's time now for the parade to begin, from the crisp sounds of marching boots set to uplifting martial music, to strong, powerful words of command set to impeccable timing, from the soft sway of our unique camel contingents to the rumbling of our mechanized forces, from the rich tapestry of brilliantly composed tableaus to the rising roar of fighter aircraft. Our senses are in for a spectacular lineup, waiting in the wings literally. जनरल ऑफिसर को मैकेनाइज्ड ऑपरेशन से काउंटर इंसर्जेंसी अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए। भारत के गौरव को उमंग के रंगों में चमकते हुए देखिए। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, AVSM, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र,
दूसरी पीढ़ी के सेनाधिकारी हैं। दिसंबर 1986 में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। इन्होंने अगस्त 2022 में जीओसी दिल्ली एरिया का कार्यभार ग्रहण किया। आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान परेड उप कमांडर 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। इन्हें दिसंबर 1989 में कमीशन दिया गया था। जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला। सलामी मंच के सामने आज की परेड के 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार माननीय राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए। बेहद खास अवसर 74वां गणतंत्र दिवस। आज कोहरे की चादर में कर्तव्य पथ लिपटा हुआ, लेकिन जोश और उमंगें आकाश को छूती हुई और जिनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी, अब वो आ चुके हैं कर्तव्य पथ पर। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा, परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, कर्नल D श्रीराम कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को दिया जाता है। इनका जीवन प्रेरणा है। बैंड की धुन कानों में और धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर। Ladies and gentlemen, is the combined band and marching contingent of the oldest regular army known to humanity from the land of fertile. हमारे वीर सैनिक, वीर योद्धा परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता। हमारा मेहमान देश मिस्र इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल अल करासवी। इस दस्ते में कुल 144 सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं। मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते ये सैनिक And now, following our guest contingent, the first contingent in the uniform of the 61 Cavalry, led by Captain Raizada Shaurya Bali, going past the saluting base.
Raised in 1953, 61st Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. It has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa in 1918. Their motto, Ashva Shakti Yashobal, which means horsepower is forever supreme, and no doubt. And after the clip-clop of the horse hooves on the tarmac, we hear the rumble and the thunder of our mechanized columns. First detachment is of the main battle tank Arjun of 75 Armored Regiment, led by Captain Amanjeet Singh. State-of-the-art MBT Arjun, an indigenous development by the DRDO. Integrated fire detection and suppression system and NBC protection system. And following them, we have the Nag missile system of the 17 Mechanized Infantry Regiment, led by Lieutenant Siddharth Tyagi. Its crewless turret is capable of firing 6 Nag anti-tank guided missiles. Satra Mek, Har Maidan Fateh, their motto of the regiment. And now approaching the saluting base, the BMP 2 of the Mechanized Infantry Regimental Center, led by Captain Arjun Sidhu of the 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. High mobility, lethal weapon system, night fighting capability, and the motto of the regiment, valor and faith. कर्तव्य पथ पर भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, जिसमें मेक इन इंडिया का तत्व हर जगह मौजूद, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में देश में निर्मित हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है कर्तव्य पथ पर। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन 3 लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन धत्तरवाल के नेतृत्व में। ये वाहन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाया गया है। विशेष तौर पर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने K9 वज्र टी का है। उपस्थित जनसमूह विस्मृत आह्लादित होकर इस सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए K9 वज्र टी के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 224 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी। K9 वज्र टी गतिमान युद्ध के लिए उपयुक्त है। परमाणु जोखिम पहचान प्रणाली भी इसकी खासियत। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वदा सर्वप्रथम अर्थात सदैव प्रथम।
सलामी मंच के सामने K9 वज्र टीम। विशिष्ट अतिथि दीर्घा भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए सलामी मंच के सामने अगला दस्ता ब्रह्मोस का 861 मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला के नेतृत्व में 861 मिसाइल रेजिमेंट ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया। दुनिया की पहली प्रचालन युक्त ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट होने का गौरव भी 861 मिसाइल रेजिमेंट को हासिल है। आदर्श वाक्य स्वामी शरणम अय्यप्पा। विशिष्ट दर्शक दीर्घा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य 74वें गणतंत्र दिवस पे भारत की सामरिक शक्ति के साक्षी बनते हुए अगला दस्ता 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का है। 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अग्रणी अजय, जिसका अर्थ सदैव अग्रणी और अजय। Short span bridge, we have the mobile microwave node and mobile network center of the Corps of Signals, led by Major Muhammad Asif Ahmed of 2 Army Headquarter Signal Regiment. The column consists of 2 vehicles, a mobile microwave node along with the mobile networking center. And this can operate on optical, microwave and satellite media to provide triple play services to include voice, data and video to field formations in active hostilities. Truly the next generation network vehicle, an enabler of network-centric operations. Motto of the Corps is Tivra Chaukas, meaning swift and secure. And just behind them, the Akash weapon system of 27 Air Defence Missile Regiment, the Amritsar Airfield, led by Captain Sunil Dasharathe, accompanied by Lieutenant Chetana Sharma of 512 Light AD Missile Regiment. This weapon system is capable of keeping our skies protected and safe. It was used as a potent deterrent in 2019 when it was employed as a countermeasure to Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes. As the audience watching in awe of these majestic machines coming down Kartavya Path. Technology which is aiding us in keeping our country safe and secure. Soon we will be able to shift our attention from the combat elements on the ground to combat platforms in the air, as we will see a formation of advanced light helicopters coming towards the saluting base. The Mechanized Infantry Regiment, approaching the dais now, commanded by Captain Harshdeep Singh Sohi of the 23 Mechanized Infantry Battalion. The Mechanized Infantry is aptly dubbed as tomorrow's regiment in today's army. This is the youngest regiment of the Indian Army, and though it is the youngest, it boasts of some of the finest and highly decorated erstwhile infantry battalions being part of its regiment. Valor and faith is its motto. And the regimental war cry is Bol Bharat Mata Ki Jai. Visibility slightly improving, but maybe it's not enough for the helicopters to be able to be here in time. But moving on. शेर जवान की जोशीली धुन
आर्मर्ड कोर्स सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड, 100 संगीतकारों का ये बैंड दस्ता सूबेदार राजेंद्र के नेतृत्व में, इनके साथ नायब रसालदार मंटू मंडल और सूबेदार राजेंद्र सिंह। जगताप की कमान में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक युद्ध घोष है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। प्रेरणा देते हुए अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने वाला दस्ता ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत दबास ने। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। इसका गौरवशाली इतिहास 254 वर्षों से अधिक पुराना है। युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कदमों से कदम, कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड। राजपूत सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड। Going past the saluting base now, the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21 Battalion of the Dogra Regiment. The motto of the regiment is Kartavyam Anvatma, which means duty before death. And their war cry, Jwala Mata Ki Jai. Word of command is from Major Ratnesh Tiwari of the 12th Battalion of the Bihar Regiment, leading the Bihar Regiment contingent. In fact, the Republic Day Parade contingent of the Bihar Regiment has been selected from all the battalions. Karm hi dharm. And their war cry, Bol Bajrang Bali ki Jai. Veer Kargil echoing here at Kartavya Path, the combined band of the Assam Regimental Centre, Mahar Regimental Centre and Jammu and Kashmir Rifles Regimental Centre with 100 musicians led by Subedar Major Diggar Singh. Lieutenant Indrajit Singh, the Sikarwar of 3rd Battalion of the 9 Gurkha Rifles, Chindits, giving the command for the unmistakable Gurkha Brigade. This is a testimony of the strong cultural and historical relations between India and Nepal, which transcend international boundaries. गोरखा ब्रिगेड का दस्ता कर्तव्य पथ पर फिजाओं में वीरता और रोमांच का संचार करता हुआ और उसके ठीक पीछे पूर्व सैनिकों की झांकी।
टुवर्ड्स अमृत कॉल विद रिजॉल्व अ वेटरन्स कमिटमेंट विषय पर आधारित ये झांकी पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है। पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं में रोल मॉडल के तौर पर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। और पूर्व सैनिकों की झांकी के ठीक पीछे नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास एम एंथोनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ इसमें 80 बैंड वादक शामिल सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं। नई सुबह की शुरुआत भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में। नौसेना के मार्चिंग कंटिंजेंट के पीछे भारतीय नौसेना की झांकी युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, संसज्जित, सुरक्षित भविष्य की विषय वस्तु पर केंद्रित। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इसमें परिलक्षित किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत सिंह चौहान और लेफ्टिनेंट वर्षा शिंदे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। झांकी में आगे डोर्नियर विमान को दर्शाया गया है। बहुत ही खूबसूरत अविस्मरणीय नयनाभिराम दृश्य कर्तव्य पथ। Warrant Officer Ashok Kumar leading the Air Force Band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March, comprising 3 drum majors and 72 musicians. As I mentioned earlier, the visibility here clearing up, and there you had the bars, which has gone past 3 MiG-29 aircraft in Vic Echelon, led by Group Captain Chitwan Arora, flying at 8,000 feet at a speed of 780 kilometers per hour. It was almost a see now and not see them again kind of fly past, because the visibility here is clearing up a bit. The marching contingent of the Indian Air Force, just behind the Air Force Band, comprising 144 air warriors and 4 officers, led by squadron leader Sindhu Reddy. Just behind the marching contingent from the Air Force, we have the tableau with the theme Indian Air Force Power Beyond Boundaries. In the center, you have a rotating globe symbolizing the Air Force's expanded reach, whereby it can render humanitarian aid across borders and also take part in flying exercises conducted with air forces of friendly foreign countries. Netra, an airborne early warning and control aircraft that carries indigenous payloads in the center. You've got the light combat aircraft Tejas Mark II, light combat helicopter Prachand, and C-95 bolstering the fighting and logistic capabilities, along with the Garuds in combat gear. Securing the nation with effective surveillance, communication, and neutralizing threats is what the DRDO, or the Defense Research and Development Organization, the premier R&D organization, equipping our armed forces with state-of-the-art defense systems, working towards Atmanirbharta in defense. New on Kartavya Path, the
DRDO tableau depicting these security measures that they have been able to design and put across. DRDO की झांकी के बाद कर्तव्य पथ पर शान से पहुंचता व्हील आर्मर्ड पर्सनल कैरियर WHAP 8x8 70 टन। DRDO ने इसे देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। DRDO की इस झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं रोहित आर मोरे। ये वाहन पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है, नदियों और नहरों को पार कर सकता है। सड़क पर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। उत्साह और रोमांच के क्षण, कर्तव्य पथ पर भव्य और शानदार गणतंत्र दिवस परेड और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता कैप्टन अक्षय की अगुवाई में असम राइफल्स के वीर सैनिकों का दस्ता। इन्हें पूर्वोत्तर के प्रहरी कहा जाता है। नारी शक्ति को दर्शाता ये दस्ता सबसे पुराना और सम्मानित पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स। युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। मधुर धुन बजाता असम राइफल्स का बैंड, 35 संगीतकार। कमान संभाली है वारंट ऑफिसर राजेश कुमार ने। बाई बैंड की कमान हवलदार पूर्ण बहादुर राय के हाथों में। भारतीय तटरक्षकों का दस्ता, हमारे समुद्रों के प्रहरी, भारतीय तटरक्षक के जवान कर्तव्य पथ पर दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रोहित सिंह। इनका साथ दे रहे हैं डिप्टी कमांडेंट अकिन जोशी और बल की 2 महिला अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट मानसी शेलर और असिस्टेंट कमांडेंट निमिषा सुपारकर। स्थापना के बाद से इस बल ने समुद्र में 11,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम ये बल। Going past the saluting pace, a flash of red, the Central Reserve Police Force Band. Inspector Shamsher Lal leading this band. Desh ke hum hai rakshak. That's the tune. ...102 personnel. And now the Central Reserve Police Force marching contingent. An all-woman contingent of the CRPF, Peacekeepers of the Nation, led by Assistant Commandant Poonam Gupta. The force has the distinction of raising the first ever women-armed police battalion in the world. Service and loyalty, the motto of the CRPF. Going past the saluting base, the Railway Protection Force Band. Constable Suresh Chanseni leading the band, the tune Gangotri.
Railway Protection Marching Contingent. Assistant Security Commissioner Saurav Kumar leading them, providing security to around 23 million passengers every day over the Indian Railways, including more than 4.6 million women passengers. And it prides itself on being the central force with the maximum representation of women in its ranks. कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का बैंड, दिल्ली पुलिस के बैंड के जवान दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए गुजर रहे हैं। नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा। उपस्थित जनसमूह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अभिनंदन करते हुए इस गौरवमयी राष्ट्रीय पर्व के प्रदर्शन का। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। इस दस्ते में 32 कांस्टेबल शामिल। ये दस्ता दिल्ली पुलिस की धुन बजा रहा है और इसके ठीक पीछे है दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिजेंट। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगाथन आईपीएस के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के इस मार्चिंग कंटिजेंट में एक राजपत्रित अधिकारी, 3 सब इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल और 100 कांस्टेबल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्चिंग कंटिजेंट को गणतंत्र दिवस परेड में अब तक 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। और अब सलामी मंच के सामने राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज का अनोखा संगम सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अचल सिंह 2IC और 2 सब इंस्पेक्टर की 35 अन्य सवारों के साथ दस्ते में शामिल। ऊंटों के कारवां के बाद आज पहली बार महिला कैमल राइडर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही हैं। ये सुसज्जित ऊंटों पर सवार हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सीमा सुरक्षा बल का उल्लेखनीय कदम। ये महिला राइडर राजस्थानी कहावत हमारी छोरियां के छोरों से कम का, इस कहावत को चरितार्थ कर रही है। सीमा सुरक्षा बल का सवार बैंड दस्ता बैंड मास्टर इंस्पेक्टर बोधराज की अगुवाई में सलामी मंच के सामने। दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र ऊंट सवार दस्ता हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की स्वर लहरियां बिखेरता हुआ। BSF Camel Band gathering applause as it moves forward. And after the military displays, we now have the youth of India on Kartavya Path. First, the NCC Boys Marching Contingent, led by Senior Under Officer Pujari Shivanand of NCC Directorate, Maharashtra. The cadets have been drawn from all the 17 directorates of the NCC. And the NCC is the largest youth uniformed organization in the world with nearly 14 lakh cadets on its rolls. Behind them, the strains of Sare Jahan Se Acha, the combined band of the NCC Boys Senior School Gwalior and NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth, Pilani, led by Senior Under Officers Abhishek Chauhan and Sweksha Gupta. Getting a standing ovation as the band moves forward with the most popular tune of Sare Jahan Se Acha. Following them, the NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Sonali Sahu of NCC Directorate, Odisha, a state from where our Hon'ble President hails.
A contingent of the National Service Scheme known as NSS, comprising 148 volunteers. The National Service Scheme has 3.91 million volunteers in its fold, drawn from 657 universities, 51 directorates and 2 councils, 20,669 colleges and institutions of higher learning, and over 11,000 senior secondary schools. कर्तव्य पथ पर संगीत की स्वर लहरियां बिखेरता भारतीय सेना का सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड धुन बजा रहा है। नंदा देवी 128 संगीतकारों के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं। सुबेदार मेजर भवन आर्य। और अब सजे धजे वाहनों में कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता पधार चुके हैं। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। बहादुरी के लिए मास्टर रोहन रामचंद्र बहिर, कला और संस्कृति के लिए मास्टर आदित्य सुरेश, कुमारी एम गौरवी रेड्डी, मास्टर संभव मिश्रा, कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी, खेलकूद के लिए कुमारी अलाना मीनाक्षी कोला गोतला, कुमारी हनाया निसार, मास्टर शौर्यजीत रंजीत कुमार खैरे, नवाचार के लिए मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान, मास्टर ऋषि शिव प्रसन्ना और समाज सेवा के लिए कुमारी अनुष्का जौली। अब बारी भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन की। प्रभाला तीर्थम पर केंद्रित आंध्र प्रदेश की झांकी। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा और अन्नपूर्णा भी कहते हैं। संक्रांति आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। त्योहार के दौरान लोग प्रभाला तीर्थम को मनाते हैं।